everyone. This is Shalu, your trainer for the paper BEGLA 136 English at Workplace. You are going to study this paper with me. We are going to have lots of fun with your dedication and hard work. So, in this unit, let me walk you through what all we are going to understand throughout this paper. First of all, we have 4 blocks divided under this paper. In the block number first, we are going to explore the job market. सेकेंड ब्लॉक में हम बात करेंगे कि हम कैसे जॉब इंटरव्यूज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें. ब्लॉक नंबर थर्ड एंड फोर्थ में हम लोग अपने आप को स्किल के लिए प्रिपेयर करेंगे. हम अपने आप में स्किल डेवलप करेंगे, वो स्किल्स इंटरव्यूज को फेस करना एंड काफी सारी चीजें की तरीके, जैसे कि आप कैसे जो है इंटरव्यू में बैठेंगे, आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कैसे लिखेंगे, अपनी प्रोफाइलिंग कैसे करेंगे जॉब्स के लिए, ओके, एंड लेटर्स लिखना, ईमेल्स लिखना. सो दिस इज अ कंटिन्यूअस जर्नी इन ब्लॉक नंबर थर्ड एंड फोर्थ, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें लर्न करने को मिलेंगी. So when we get started, let's start from the block number first. So ऐसा क्या है block number first की units में जो आपको सीखने को मिलेगा? Okay, सबसे पहले तो आपको job market पता है, okay, जहाँ पर आप job search कर रहे हैं. Okay, इस unit से you are going to understand कि how you're going to profile yourself on the job. Okay, how will you profile yourself? How will you reflect yourself? Okay, then when the word job comes, so सबसे पहले तो हमें उसे ढूंढना पड़ता है. Okay, so सबसे पहले we go and find a job. Okay, so we search for a job. Okay, and then how do we respond to different types of advertisements? Job कहाँ से लेके आते हैं हम? जब हम कोई advertisement देखते हैं कि oh, okay, यहाँ पे एक vacancy है, यहाँ पे इतनी vacancies हैं, then we go and then we search for the jobs, and then how do we respond to the advertisement is what you are going to learn from the units of block number 1, that is exploring the job market. And lastly, under the fourth unit, you will also learn how to prepare for the job. Okay, अब तक आपको सिर्फ पता है कि एक जॉब करनी है बड़े होके, okay, पर आपको ये नहीं पता उसमें क्या क्या चीजें होती हैं. Okay, so this unit is the base unit. मतलब आपको बेस बना देगी, आपको पता चल जाएगा कैसे आप जॉब्स पे जो है रिस्पॉन्ड करते हैं, how do you cope up with the advertisement, how do you properly with ethics, with formal manner respond to the job advertisements. Okay, and finally this unit, this whole block will prepare you for the job. Okay, so when we move to our block number 2, then you will learn how to prepare yourself for job interviews. देखो, जब भी कोई इंटरव्यू होता है तो हमें सबसे ज्यादा लगता है डर. ओके, सो जब आप इस यूनिट को मेरे साथ कवर करेंगे, आपका डर एकदम खत्म हो जाएगा. ओके, बहुत सारे लोग होते हैं जो इंटरव्यूज देते हैं बट उन्हें तरीका नहीं पता होता, मतलब हाउ दे हैव टू बिहेव, व्हाट दे हैव टू ऑल ड्रेस अप, क्या क्या चीजें होती हैं जो इंटरव्यू के टाइम पे आपको ध्यान रखनी होती है. इवन आपके बॉडी वर्ड्स, ऐसे स्लाउची नहीं बैठना, ऐसे नहीं करना, ये आईज ब्लिंक नहीं करनी. सो जब हम अपनी बॉडी के थ्रू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आप इसमें सीखेंगे, ओके, कि कैसे हम अपनी बॉडी के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं. हम अपना मुंह नहीं बोलते हैं बट सामने वाले को पहले ही पता चल जाता है what is our behavior, what is going on in our mind, and how is our confidence. So in this blog, under the units of this blog, you will learn about how you can communicate non-verbal through your body language, जैसे कि अपने hand gestures use कर सकते हो, eyes, you can make an eye contact, you can sit straight. Okay, so you are going to learn the body communication through the very first unit of block number 2, unit number 5, that is, okay, आपको portfolio making समझ में आएगा कि कैसे आपको एक portfolio अच्छा सा अपने लिए बनाना होता है, that is your total representation. Okay, how to write a curriculum vitae. Okay, so CV आपको लिखना आएगा इस ब्लॉक के अंडर, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लर्न कि कैसे इंटरव्यूज में स्मार्टली कॉन्फिडेंटली बिहेव करना है और आप अपने इंटरव्यूज एस करके आएंगे इस whole block के बाद. Okay, so then you are going to understand in block number 3 that what are the skills required at a workplace. Okay, आप workplace पे होते हो तो उस पे आपको एक कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने होते हैं, कुछ स्किल्स होती हैं. ओके, जैसे कि आप अगर किचन में काम कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि एक माली आके किचन में काम कर सकता है. ओके, उसको भी जो है स्किल्स चाहिए होती है, उसको प्रॉपर कटिंग चॉपिंग आनी चाहिए. ओके, प्रॉपर उसको नॉलेज होना चाहिए फूड का, तभी वो कुकिंग कर सकता है. ओके, सो सिमिलरली व्हेन यू आर एट अ वर्क प्लेस, आपको कौन कौन सी स्किल्स आनी चाहिए, वो स्किल्स आप मेरे साथ इस पेपर में अंडर द यूनिट्स ऑफ ब्लॉक नंबर 3 लर्न करेंगे. ओके, जैसे कि
you'll understand कि क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन कैसे होता है बिजनेस कॉन्टेक्स्ट के बीच में। आप बहुत सारे कस्टमर्स के बारे में सीखेंगे कि मतलब किस किस तरह के कस्टमर होते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि कस्टमर सिर्फ आता है और सामान लेके चल जाता है। बहुत सारे तरह के कस्टमर्स होते हैं जो सिर्फ एक इंक्वायरी लेने आते हैं, एक सिर्फ टेस्ट लेने आते हैं, एक होते हैं कि जो रैंडमली परचेज कर लेते हैं। ओके, एंड उनकी कस्टमर सर्विसेज के बारे में आप इस ब्लॉग के अंदर सीखेंगे। ओके, सो यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वर्क एथिक्स जो है, आपने एक वर्ड सुना होगा। ओके, बिहेवियर मतलब आपको एक प्रॉपर तरीके में ही आपको बिहेव करना होता है, एक सेट ऑफ मॉरल वैल्यूज होता है। ओके, सो उसके अंदर ही आपको काम करना होता है। तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है उन वर्क एथिक्स की जिनको आप फॉलो करते हो एज अ रिप्रेजेंटेटिव, एज एन एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। आप कुछ सेट ऑफ वैल्यूज जो है फॉलो करते हैं, सेट ऑफ नॉर्म्स जो है फॉलो करते हैं, जैसे कि आप हार्ड वर्किंग है, आप डेडिकेटेड है। ओके, आप कंसिस्टेंट है। सो बहुत सारे आपके वर्क एथिक्स होते हैं। ओके, जिनको आप फॉलो करते हैं। सो उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड विद मी अंडर दिस blog. Okay, that is block number 3. And our last and major block, that is block number 4, that talks about skills at workplace. Second, okay, it essentially talks about linguistic का मतलब होता है language. Okay, language और linguistics. Okay, लाइफ स्किल्स के बारे में वर्क करता है। ओके, कि क्या क्या लाइफ स्किल्स हैं जो वर्क प्लेस पे रिक्वायर्ड होती हैं, लैंग्वेज रिलेटेड लाइफ स्किल्स एट अ वर्क प्लेस। ओके, देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू पार्टिसिपेट इन डिस्कशंस। जो भी मीटिंग्स होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, उनके बारे में आपको, उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में, उनमें पार्टिसिपेट करने के बारे में आप लोगों को पता चलेगा, उसकी इंपॉर्टेंस का पता चलेगा। एंड देन फाइनली यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक प्रेजेंटेशंस। देखो, आप किसी भी फील्ड में जाओ, whether you're going to become a lecturer, a teacher, okay, a company representative, okay, or whatever, आपको प्रेजेंटेशन कुछ हद तक प्रेजेंट करनी ही पड़ती है। ओके, इफ यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनीथिंग, एनी इंस्टीट्यूशन, ओके, बी टीचर, a company company manager, a salesperson, or whatsoever. Okay, you have to represent those things. You have to represent the agendas, the objectives of whatever you are required to do. आपको presentations बनानी पड़ती हैं और उसके लिए आपको एक proper जो है फिर वहां पर कोर्स करना पड़ जाता है। लेकिन इस केस में आपको प्रेजेंटेशन बनाना सिखाया जा रहा है एक ही पेपर के अंदर। यू आर गोइंग टू गेट लॉट्स ऑफ स्टफ दैट पीपल डू अलग से कोशिश करते हैं। okay? लेकिन आपको इसी यूनिट के अंदर इतना सारा कुछ मिल रहा है। ओके, आपको बिजनेस लेटर्स लिखने आएंगे, ईमेल्स लिखने आएंगे, बट व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज जस्ट sit straight in the classroom and understand those things with all your attention. Okay, एक बार आपने सुना तो lifetime you're going to remember, और एक बार आप चुप गए तो फिर then you will have a difficulty to understand all those things, and then people go and spend lots of money. तो अगर आप एक बार इस कोर्स की वीडियो अच्छे से देखेंगे, then you're going to understand the whole thing in just one, under just one paper. Okay, so then finally देखो, हमने काफी सारे पेपर्स किए हैं। ओके, उसमें हमें थ्योरीज के बारे में पता चलता है, बट इस पेपर में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आप इंग्लिश को सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे। सो यू आर गोइंग टू डेवलप all the 4 listening, speaking, reading and writing skills under this paper. Okay, so आपको एक ही पेपर से जब 4 चीजें सीखने को मिल रहा है तो वाह वाह क्या मजा आता है। Okay, so all you have to do is just be patient, just be consistent throughout the paper, and we will take lots of doubts, understand the things through real life examples. Okay, and we will have heuristic things throughout the session, and आपके लिए बहुत सारे warm up games, बहुत सारी videos है मेरे पास, if you are dedicated to learn English at workplace with me in this blog, in these blogs. Okay, so I hope this is clear to you. Now you have an understanding कि हम इस पेपर के अंदर क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या चीजें हैं जो आपको आपके अंदर डेवलप होंगी थ्रू आउट दिस पेपर, और क्या क्या नहीं, काफी सारी चीजें हैं। सो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट वॉच द वीडियोस एंड हैव फन। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द ब्लॉक नंबर 1 and its very first unit in the coming time. Thank you and have a nice day.